Good morning, students. Good morning. Welcome back to our another online lecture. We have started our new chapter, that is immobilization of enzymes, and we have discussed certain methods of immobilization of enzyme. We have started our physical method, and yes, we have shown our first method, that is adsorption. In today's video, we will discuss our next physical method, that is entrapment and encapsulation. Before discussing these two methods, we will quickly revise what is adsorption. Adsorption, to adsorb the enzyme onto the given matrix or support material. It may be any matrix like polyacrylamide gel or any we can say any polymer matrix. Okay, so that was the adsorption, means यहाँ पर सिर्फ adsorb होते हैं by the weak interaction, and in this method enzymes can be easily removed by the enzymes can be easily removed from the matrix. That was the adsorption. Let's see our next remaining method, that is that is entrapment and encapsulation. Now this is very simple and easy methods to understand, as I have told you this previously also. This chapter is so easy, just understand the concept and you can write by mind also what are these terms. Now entrapment, if we will see the meaning of this word, to entrap, to capture, to caught or to catch, that is the meaning of entrapment. पकड़ लेना या जकड़ लेना हम उसे कहेंगे in simple terms. Okay, to put into the jail, like that type. Okay, so that is the entrapment. Now in this method, what we have to put into jail or what we have to put into the lockup, we have to put the our enzyme of interest into the lockup. Okay, so that is the entrapment. We have to entrap our enzyme or we have to entrap our cells. Okay, so in this method the enzymes are not directly attached to the support surface, but these are trapped or these are caught inside the matrix. You can see the diagram. You see in the rectangular or square shape, the boxes are being created, and into that box our enzyme containing the active site is being trapped. Okay, and in second diagram the circular shape is been shown, and into that circular shape the enzymes are caught or enzymes are trapped. Okay, within that suitable gel. It may be any gel, like we can see types are been given. If gel is there, then polyacrylamide gel is been used. I have told you the meaning of this, all the terms, when we were discussing the matrix. Okay, so polyacrylamide, it is the synthetic resin which is made by acrylamide, or which is made by polymerizing acrylamide. Okay, it is generally used to form the gel. Next, it may be this enzymes may be captured into the fibers used are same cellulose and polyacrylamide gels. It may be microcapsule, which include polyamide or polybasic acid chloride monomer. Now what is this polybasic acid? तो polybasic acid है, these are the acid which contain more than one reactive group. Many, okay, more than one reactive groups are present onto that acid. So that is the meaning of polybasic acid monomer. Okay, now here two methods have been included how we can entrap the enzymes. First one is lattice type entrapment and second is microcapsule type entrapment. उसको आप encapsulation भी बोलते हैं या फिर membrane confinement भी बोलते हैं. Okay, first we will see the lattice type. Now what is the meaning of lattice? You can see the diagram. In diagram it indicates that there is like a rectangular or square shaped is been formed, and the boxes are been created or the columns are been created, and into that column the enzymes are entrapped. So that is overall structure of lattice type. It is a structure of, if you will see exact meaning of lattice, it is structure of wooden or metal strips.
ओके, विच इज़ यूजुअली इट इज़ लाइक, ये ऐसे अरेंज होते हैं कि एक डायगोनल या फिर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, आप उसको बोलते हैं लैटिस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसको लैटिस नाम दिया है, और उस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में एंजाइम ट्रैप हुए हैं। ओके, ये सब क्यों होता है? जस्ट टू कैरी आउट अ स्टेबल रिएक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, और वही एंजाइम बाद में रीयूज़ किए जाते हैं फॉर नंबर ऑफ रिएक्शंस, जहाँ जहाँ उस एंजाइम की यूज़ होता है तो वहाँ ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने अगर देखा कि पॉलीमर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, पॉलीअक्राइलामाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और कुछ नेचुरल पॉलीमर जैसे कि स्टार्च, ये भी यूज़ किए जाते हैं। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? टू क्रिएट द मैट्रिक्स, ओके, और टू क्रिएट द कॉलम, टू क्रिएट द लैटिस, उस हिसाब से वो एंजाइम उस लैटिस में एंट्रैप होंगे, ओके। सो दैट इज द लैटिस टाइप एंट्रैपमेंट। नेक्स्ट वाज माइक्रो कैप्सूल टाइप एंट्रैपमेंट। तो इसमें क्या होता है, हियर एंजाइम्स आर बीन एनक्लोज्ड और एंजाइम्स आर बीन ट्रैप्ड विद इन द सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन, ओके, सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन इन द सेंस दिस एंजाइम कैन इजीली, एक बार एंजाइम ट्रैप हुए तो रिएक्शन कैन इजीली बी कैरिड आउट, और वो रिएक्शन जो फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द कॉलम, ओके। सो दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज बीन यूज। मोस्टली नायलॉन मेम्ब्रेन यूज किया जाता है जो कि स्पीयर शेप्ड में कट किया जाता है, ओके। सो दैट इज द मेथड नोन एज द माइक्रो कैप्सूल। Getting my point? Next method is yes, there is entrapment के वही मेथड यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, ऑक्यूलेशन और माइक्रो इनकैप्सुलेशन, द सेम एक्सप्लेनेशन इज बीन देयर, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है कि अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एंजाइम, सी 1 ग्राम ऑफ एंजाइम पर ग्राम ऑफ जेल और फाइबर में भी एंट्रैप, मतलब 1 ग्राम एंजाइम 1 ग्राम मैट्रिक्स या फिर 1 ग्राम जेल में एंट्रैप हो सकता है, ओके। सो इट इज द मेजरमेंट मीन्स 1 ग्राम ऑफ एंजाइम विल एब्जॉर्ब 1 ग्राम ऑफ मैट्रिक्स will absorb 1 gram of the enzyme, okay, or 1 gram of the yes, you can say the 1 gram of enzyme or 1 gram of the cell. So that is been there, okay, when we will burst the cell. तो यही सब है, यही सब सेम concepts यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. Just keep in mind that you have to entrap the enzyme onto the matrix or inside the matrix instead of spelling the word onto. स्पीक दी इनसाइड द मैट्रिक्स, क्योंकि एंट्रैप आप इनसाइड करेंगे, ऑन टू दी सरफेस नहीं करेंगे. अगर आप ऑन टू दी करते हैं तो इट इज़ द मेथड ऑफ एड्सॉर्प्शन, बट नाउ यू आर डूइंग इनसाइड, सो इट इज़ द एंट्रैपमेंट. देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. इफ यू विल सी द एडवांटेज, सो लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी डेफिनेटली, आप एंजाइम कंप्लीटली एंट्रैप कर रहे हो तो एंजाइम बाहर तो जाने वाला नहीं है, लीकेज प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है. सो एंजाइम जो एंजाइम कंप्लीटली यूज़ होगा, जितना रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ होगा और बाकी का एंजाइम वैसे ही रिटेन होगा, ओके. सो दैट इज द रिटेनेशन ऑफ द एंजाइम एंड दैट इज प्लस एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, ओके. If we will see the disadvantage, in this substrate cannot diffuse deep into the gel matrix, यानी कि क्या है, जो सबस्ट्रेट है जो हमें रिएक्शन कैरी आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, and this method substrate is not being generally completely involved into the matrix, okay. हम कहेंगे ऊपर ही उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, रिएक्शन ऊपर ही कैरी आउट होती है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना कैरी आउट नहीं होता, इतना उसका इफेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके. The reaction is been carried out, just the problem is that substrate is not diffused into the matrix, okay. If it's not diffused, there is no any hard and fast rule कि substrate diffuse होना ही चाहिए, ठीक है. सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. एंड अगेन द एंजाइम कैन लीक इनटू द सराउंडिंग मीडियम. देखिए एंजाइम मैट्रिक्स में तो लीक होगा नहीं, बिकॉज एंजाइम कंप्लीटली एंट्रैप है उस मैट्रिक्स में, लेकिन जब आप ये एंजाइम को बाहर निकालते हैं, ओके,
वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकालते, वो कॉलम में जब आप रखते, मैट्रिक्स में लीकेज नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स में ही वो एंट्रैप है, मैट्रिक्स में ही वो फंसा हुआ है, लेकिन जब आप मैट्रिक्स से बाहर निकालते बॉन्ड ब्रेक करके, तब एंजाइम की लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, बिकॉज इट इज़ बिन टाइटली बाउंड एंड सडनली उसको बाहर निकाला गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, सडनली उसको बाहर निकाला गया है, तो देयर विल बी सम लीकेज प्रॉब्लम. सो दिस आर दी सर्टन डिसएडवांटेज. एंट्रैपिंग मेथड के और एडवांटेज डिसएडवांटेज का मैंने एक दिस इज बिन स्लाइड डाउन साइड, फिर से एंट्रैपिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए हैं. नाउ नेक्स्ट मेथड इज एनकैप्सुलेशन. Now this in encapsulation method, what has been there? In encapsulation there is enclosing of liquid droplet of solution, okay, in a semi permeable membrane capsule. मतलब क्या है, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक लिक्विड पार्ट उस कैप्सूल में या फिर उस कोटिंग में क्या है, एनकैप्सूल हुआ है, मतलब देयर इज कवरिंग ऑफ कैप्सूल एंड दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ any nylon membrane or any cellulose membrane. Okay, and this method is very simple and cheap to use or to applicable, या फिर अप्लाई करने के लिए मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूजफुल है. ओके, सिर्फ जस्ट कीप इन माइंड दैट इन दिस मेथड व्हाट इज देयर, द ड्रॉपलेट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कैप्सूल, मतलब यहाँ पर जो एंजाइम का पार्ट है इट इज़ बिन कैप्सुलेटेड, और वही एंजाइम का पार्ट किससे कवर होता है, बाय द कैप्सुलेशन. ओके, कैप्सूल फॉर्म होती है, जैसे कि हमने पहले वाली मेथड में देखा इन एंट्रैपमेंट, वहाँ पर एंजाइम को एंट्रैप किया गया था, अंदर इंसर्ट किया गया था इनटू द पॉलीअक्राइल अमाइड मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर एंजाइम एक कैप्सूल में कवर है. ठीक है, अंदर ही है, लेकिन इट इज बीन इन दी कैप्सूल. सो दैट इज द एनकैप्सुलेशन मेथड. एंड इन दिस मेथड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, आप बहुत सारे एंजाइम इमोबिलाइज्ड कर सकते हैं. ओके, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज इमोबिलाइज्ड. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज यूटिलाइज्ड विद द इंटैक्ट मेम्ब्रेन. इसका मतलब क्या है कि जो जैसे पहले मेथड में सबस्ट्रेट डिफ्यूज नहीं होता था, ओके, इस मेथड में कंप्लीटली ऑपोजिट है, इस मेथड में सबस्ट्रेट इज बिन डिफ्यूज्ड. okay, so that is the disadvantage of this method, and this method is restricted to the medical science. जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर कैप्सूल में एंजाइम कवर होता है और कैप्सूल तैयार होती है नायलॉन की या फिर एनी सेलुलोस नाइट्रेट मेम्ब्रेन की. सो दैट इज द एनकैप्सुलेशन मेथड. ओके, कैन सी इन डायग्राम, सी सबस्ट्रेट इज बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट और अंदर एंजाइम से, और वो एंजाइम कहाँ कवर्ड है, नायलॉन मेम्ब्रेन से कवर्ड है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर तैयार की गई है. इट इज क्वाइट सिमिलर टू द एंट्रैपमेंट. ओके, एनकैप्सुलेशन मेथड ही क्वाइट सिमिलर है एंट्रैपमेंट के. So this is all about your two methods, entrapment and encapsulation. Just understand the concept. If once you will understand the concept, you will be able to write. Entrapment में enzymes are being entrapped into this into the solid matrix, और encapsulation में capsule form होती है and inside that capsule the enzymes are being entrapped, and that capsule is made up of, that matrix is made up of this nylon or nitrate cellulose membrane. So that's it. In next video we will discuss our next chemical methods. Thank you.